हेलो गुड इवनिंग हेलो नमस्कार दोस्तों वेंसडे लाइव में आपका स्वागत है वेलकम यू फॉर येट अनदर 45 मिनट सेशन ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स ऑन स्टॉक मार्केट। और आज फिर मेरे साथ जुड़े हैं अभिजीत पॉल। अभिजीत दा, गुड इवनिंग। Good evening. Namaskar, everyone. नमस्कार नमस्कार। अभिजीत, आई कैन सी योर बैकग्राउंड लवली पिक्चर। आई कैन सी अ बुल सिटिंग। इज इट अ बुल और अ डियर? That one, हाँ। that's a Nandi. ओह, जो इट्स अ शिवा नंदी नंदी नंदी। शिवा के लिए एंड वेट कर. I can see lovely weather outside. Is it raining? No, it's overcast throughout the afternoon today. Acha, So just like market. just like the markets, that's correct. Chalo, Abhijit da, the topic Yes. of today's discussion is that how to catch stocks which can potentially give us 50% return. Very Correct. interesting topic. थोड़ा सा clickbait है, थोड़ा catchy topic है. But with you, I think we can also get a lot of substance in the discussion because I've seen you finding these amazing ideas for your clients, for our TMP students, and follow on. So let's talk Yes. about it. We all know technicals. हमारे एक फॉर्चुनेटली इलन मार्केट्स के जितने लर्नर्स हैं उनको मोटा मोटी बेसिक्स पता है अभिजीत दा। हाँ, Yes. चलिए थोड़ा एडवांस में चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कैसे पकड़े ये 50% मूवमेंट वाले स्टॉक्स को। All right. Let me present my screen. या आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मुद्दे पे सीधा आ गया हूँ क्योंकि आई नो दैट समय कम है, तो सीधा अभिजीत से मुद्दे की बात करो और काम से काम लो। I ओह like माय it गॉड, that आई way. कैन सी अ Let डॉक्यूमेंट me, हियर। if you can see, I just created 2, 3 slides before I straight away take you to the charts. या So the idea is to catch big trends. So essentially, what we would like to understand is if we want to catch a 50% gainer, let's say on the upside, so we need to ride a trend because that trend is going to give me that 50% return. So for that, I need to first identify a trend. There are various ways in which we can do that. I will show you one simple way. And once we identify it, the next job will be to ride this trend to our best potential. ऑसम। Uh, Today, I was sharing with my followers that today, 6 p.m., I'll be joining with you to talk about this topic. And in my post, I mentioned the word patience. In this discussion that we are going to have today evening, the emphasis will be big time on this requirement for any kind of investor or trader, that is patience. आपको याद होगा दैट आई थिंक 2 or 3 years बैक हम लोग ने एक बार फेस टू फेस किया था हाँ। एंड वहाँ पे इन वन ऑफ योर क्वेश्चंस आई शेयर एन आंसर विथ यू कि मुझे लगता है दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ट्रेड इन द मार्केट, वो है सबर और जिगर. हाँ, सबर करेक्ट। एसेंशियली इज पेशेंस. तो सबर चाहिए राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, और जब अपॉर्चुनिटी दिखता है स्क्रीन पे तब जिगर चाहिए. ट्रेड ले लिया उसके बाद भी थोड़ा बहुत सब्र चाहिए टू हैंग ऑन टू द ट्रेड, टू लेट द ट्रेड ब्रीथ. So in this particular discussion that I'm going to have with you today evening, 50%, because 50% can come only from a mega trend, we need patience to first identify it, ride it, that is wait for it, jump on board, and then ride it so that we get the 50%. I'll show it to you in a step by step manner. यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन पे जो चार्ट डाल के रखा है वो टाइटन का कुछ मंथली चार्ट है. 2020 से जो 2022 मिड तक जो ये रैली था, दिस वाज अराउंड 285%. नाउ ऑफ कोर्स वी आर नॉट अटेम्प्टिंग टू बाय द लो, नाइदर आर वी अटेम्प्टिंग टू सेल द हाई. अपने को इस 285% के बीच में अपने को कहीं पे एक 50% मिल जाए तो बस अपना रिक्वायरमेंट यही है. बरोबर है, राइट. छोटी सी आशा। हाँ, but that's okay. Uh, with this, let's see how we can identify and ride the trend. Now, where do we get these mega trends? ये mega trends कहाँ मिलेगा अपने को? Let's say 285% trend जहाँ से हम लोग 50% निचोड़ के निकल जाएंगे. Where do we get them? Now, अगर एक investor point of view से बात करें, so of course we have to look at intermediate and long term charts. ये daily chart से या intraday chart से अपने को तो मिलेगा नहीं. So we have to shift our attention to weekly and monthly charts, especially monthly charts.
नाउ यहाँ पे डिस्कशन 50% ऑन द लॉन्ग साइड भी हो सकता है, ऑन द शॉर्ट साइड भी हो सकता है, बट बिकॉज हम लोग प्राइमरीली मंथली चार्ट से बात करेंगे, it's very difficult to hold on to a futures or an options trade and keep on rolling for 12 months or 13 months. It's possible, but majority won't do that. तो हम लोग आज इवनिंग का जो the call that we are going to take is primarily going to be on the long side. Cash market, monthly charts देख के, can I get a 50% gain? There's Okay. other side to that also, that why can't a trader make 50% in a trade? Of course, a trader Yeah. can. But when I think of a trader, when I think of the way I would like to trade and the techniques that I share in TMP, STMP, etc., are primarily 1 to 5 day trade. That's a हाँ. typical short-term trading model, which हाँ. we do in our live classes also. तो 5 दिन में 50%, of course, it's a difficult task, but there is an हाँ. option, and that is only in the option segment. Hmm. Now, here is a little difficulty here कि options के चार्ट उतनी easily मिलते नहीं है. If you open your broker account who gives you the option charts, वहां पे आपको डेली चार्ट भी नहीं मिलेगा. वहां पे at max आपको 125 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट चार्ट मिलेगा. Which means the data of an option strike price chart wise is fairly limited. फिर भी वहां से 50% निकल के आ सकता है. I'm not saying it can't, but the discussion that we are going to have, if we want to see multiple examples, then we would focus more on the left hand side of this slide. ओके With सो this in अभिजीत, mind, सॉरी मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, और इनफैक्ट देयर आर सम पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस आल्सो रिलेटेड, तो मैं कुछ कुछ पूछता रहूंगा आपको. मुझे बिल्कुल. बताइए, आप है टेक्निकल एनालिसिस में गुरु. ओके, इन आवर वर्ड्स यू आर अ सुपर हीरो. जो हमारे इलन मार्केट्स में सुपर हीरो लिस्टेड है ना, उसमें से आप एक हैं. टेक्निकल एनालिसिस करके आदमी इन्वेस्टर कैसे बनेगा? Why not? See, technical analysis is the study of price movement. हाँ. Price movement defined in two dimension, the price movement in the dimension of time. हम्म. Fine. So on one axis you have price, on one axis you have time. हम्म. Fine. So the biggest strength of a technical analyst is he or she can play with the time. When I say play with the time, आप किसी भी चार्ट्स के टाइम फ्रेम्स चेंज कर सकते हो. You can look at a 5 minute chart. You can look at a 12-month chart, which is a monthly chart. The point 12, what the point that I'm trying to make over here is this fact, this area, जहाँ पे हाँ. price movement, I can change the time frames, is a big boon, big boon to a technical trader. So if you want to invest, you will not look at a 5 minute chart or a daily chart. You'll be focusing more on the time frames, on the higher time frames. If you're an intraday trader, आप monthly chart से आपको कोई लेना देना नहीं है. You'll focus more on the short term time frames. जो कि एक let's say a fundamental analyst will not be able to do that. उसको वो scope नहीं है. A fundamental guy who is going through the company will have to keep at least 1 year to 2 years time frame for the company to show those kind of results. But technical analysis के लिए है. One. Two, the nature of fractals. Like the macrocosm is the microcosm. So when we are let's say taking a look at Tata Motors monthly chart, what do we see? Highs and lows and ups and downs and tops and bottoms and consolidations. अगर मैं आपको नहीं बोलता ये monthly chart है, would you be able to understand whether it's a 5 minute chart or a monthly chart? नो आइडिया एट ऑल. If I show you the 15 minute chart of Tata Motors, आपको वहां पे भी ups and downs दिखेगा, consolidation दिखेगा, high दिखेगा, low दिखेगा. बरोबर है. So if you take a look at the behavior of price, which is out of demand and supply, demand greater than supply uptrend, supply greater than demand downtrend, ये microcosm मतलब intraday time frames में भी है, ये macrocosm larger time frame में. So it's a fractal nature. If you later on do the Google search on the word fractal, you will see how the entire universe and the stock markets are very fractal in nature. So जो technique हम लोग daily charts में use करते हैं, are they applicable on the monthly charts? Yes. Of course. In the weekly charts? Yes, of course. But those techniques need to be robust, needs to be logical. I'll show you one example. Don't worry. Is there any other doubts? Any other question?
No, no, no. But I'd love to see some practical examples. Sure, of course. Now, practical examples. How do we identify these mega trends? Now, I'll take you to the charts and the practical examples. Now, as I said, we can play around with various time frames because our intention objective over here is 50%. We need a fairly decent size move, जिसके बीचों बीच हम लोग कुछ रिटर्न लेके निकलने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं. So I know I need to participate in a mega trend for which I have to define the trend, then define my entry point, and if I get 50%, I'm out. I can use a stop loss, I may not use a stop loss. वो pointers पे हम लोग बाद में. First, let's talk about identification. Point number one, we will use monthly charts for this. Again, you can use weekly, daily also, but for this purpose, monthly charts. Number two, we will not look at the conventional open, high, low, close bars या candles नहीं देखेंगे. इस चार्ट को थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे, and none better than changing it to Heiken-Ashi. Heiken-Ashi is a modified candle which kind of irons out the volatility, the choppiness, Okay. and it gives a smooth looking feature to the trends, up and down trends. मैं quickly यहाँ पे दो चीज बोल देता हूँ, those who are not aware of Heiken-Ashi that much. That is, you will get a green Heiken-Ashi which may look like this, or a green Heiken-Ashi which may look like this. That is, a green Heiken-Ashi is a sign of bullishness in the market. जब उसका upper shadow होता है और lower shadow नहीं होता है, this is a strong uptrend, an indication of a strong uptrend. जब उसका Okay. दोनों shadows होते हैं, it's an uptrend, bullishness है, but उतना खास नहीं. ठीक इसका opposite is on the downside. A red Heiken-Ashi जिसका lower shadow है but upper shadow नहीं है, this is a sign of a downtrend which is a pretty strong downtrend. The second case possibility is a red Heiken-Ashi जिसका एक lower shadow है, upper shadow भी है, inclination bias थोड़ा सा नीचे की तरफ है, but not as strong as the first one. Any chart, any Heiken-Ashi chart in any time frame आपको इन चारों के ही various different types of combinations दिखाएगा. अच्छा, इनमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और कैंडलस्टिक में, एक बार फिर से बता देंगे? Heiken-Ashi is a modified. For example, Heiken-Ashi का जो सोचिए जो क्लोजिंग प्राइस होता है, let's say I'll take you, Heiken-Ashi का जो क्लोजिंग प्राइस होता है, वो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस का, एक्चुअल ओपन हाई लो क्लोज का, ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 4 होता है. Heiken-Ashi का हाई, previous high, or Heiken-Ashi के high के max. So there is a formula that goes. If you just go to the Google and just find Heiken-Ashi formula, you will find it. It's there. It's simple. The difference that it brings, for example, ये difference समझने के लिए, I think what I can do quickly is screen को दो पार्ट में तोड़ता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड को कन्वेंशनल कैंडल्स कर देता हूँ, राइट हैंड साइड को हाइकन रखता हूँ. दोनों ही आपका आयशा मोटर्स का मंथली चार्ट. ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट वन एरिया. लेट्स टेक अ लुक एट, ज्यादा नहीं जाएंगे, इतना ही यूज करते हैं. और इफ यू वांट टू जूम इन, ये रहा, यहां पे आप देखिए. सो व्हेन यू लुक एट इट विजुअली, you will see that Heiken-Ashi's downtrends or uptrends, when it goes up, it's much more smoother. For example, यहाँ पे जो छोटा सा एक नेगेटिव बार था, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको. So if you're looking at the raw price और आपको ये uptrend दिखा, यहाँ पे जो red mark आता है, something like an engulfing pattern, you might start to think, अरे ये गिर सकता है, but Heiken-Ashi वो feel आपको नहीं देगा. So जो छोटे मोटे corrections होते हैं, जो smaller movements होते हैं, वो Heiken-Ashi easily उसको negate कर देता है. So that visually you see a cleaner trend. इसके upsides भी है, इसके downsides भी है, but it's a modified. The right word to define a Heiken-Ashi, it's a modified version of actual price. It slows down, and actual price का जब move आता है, जो movement आता है, उसके ठीक एक candle बाद Heiken-Ashi का movement. The correct word is confirmation. We in TMP, STMP, in our courses, in our program, जब हम लोग short term trading सीखते हैं,
Heikenhashi plays an immense role. If you talk to any of our TMP students or the STMP students who trade with me every week, they'll swear by the technique that we use using this Heikenhashi charts. So So ये coming back हाइकनाशी to भी this ट्रेडिंग particular chart on मेंटरशिप प्रोग्राम का Heikenhashi, पार्ट है. हाइकनाशी इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम. जी बिल्कुल. ओके. जब स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे टीएमपी में, that's exactly where I will teach them how to identify. Heikenhashi मेरे टेक्निक में लास्ट में आता है. मतलब the technique that we use is first identify, first create a view. आपको किसी भी स्टॉक का उस चार्ट पे एक व्यू चाहिए. दो किस्म के, तीन किस्म के व्यू हो सकता है. बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है. अगर बेरिश व्यू निकल के आता है तो व्यू मेरा बेरिश है, अभी मुझे उस ट्रेड को टाइम करना है. उसके लिए मुझे जो चाहिए वो है ट्रिगर. ये जो ट्रिगर है कि क्या करना है और कब करना है, ये ट्रिगर मुझे हाइकेनाशी दे. This is what I Okay. personally trade and share, and all our trades are documented. We maintain a Google sheet. We record all our videos. All the trades that we have done, we can just look at the archives and you can see how closely we monitor this chart. ओके. सो ठीक है. कॉन्सेप्ट So समझ गया हाइकनाकी का. आप आगे बढ़ते हैं. सो अभी आप मंथली आगे चार्ट बढ़. देख रहे हैं हाइकनाकी आइशर मोटर्स का. लॉजिक मंथली चार्ट देखने का लॉजिक ये है कि मुझे मेगा ट्रेंड से 50% निकालना है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डेली चार्ट. डेली चार्ट देख के प्रॉब्ली 5-10% आराम से निकल जाएगा. बट बिकॉज टुडे इवनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट 50%, that's why I'm taking you to monthly chart. This is the logic of selecting monthly chart. The logic of selecting Heikenhashi is I want to slow down the pace of the trends. I want proper confirmation. मुझे उतना जल्दी नहीं है. I don't want to jump into any uptrend or downtrend just by looking at gainers. So I slowed down the chart a little bit. Now, visually, both of us can see this. Both of us can see this and this, etc., etc. But I need rule. I need a technique, a setup, which is simple, which is easy to follow, and which will give me that 50%. Now, we can use this raw Heikenhashi right in front of us to do that. We can. I can. But to give a slightly better feeling to the setup, all that I'm going to do is bring in a spread of moving averages. Now, what we are going to do, just let me walk you through and explain the logic. There's an indicator called MACD, जिसको moving average convergence divergence बोला जाता है. ये क्या करता है, दो मूविंग एवरेजेस के डिफरेंस को लेता है, स्प्रेड को लेता है, और फिर उस स्प्रेड का एक एवरेज निकालता है. जेरल्ड एप्पल हैड डेवलप्ड दिस वे बैक, एंड उनका पैरामीटर्स था 12, 26, 9. इट हैज सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसमें नहीं जाएंगे. The way we are going to use it is, if you find a good mega trend in any sector or any stock, or even if you take a look at the index, a decent bull market lasts for 3 to 5 years. A good decent uptrend will last for minimum a year, if not more than a year and a half. इस लॉजिक के साथ what I'm going to do, ये जो फास्ट लेंथ है, शॉर्ट टर्म है, इसको मैं 12 रखूंगा. Our time frame is monthly. 12 मतलब एक साल का एवरेज. ओके. जो स्लो है उसको 24 कर दूंगा, मतलब 2 साल का एवरेज. 2 साल का एवरेज प्राइस, 1 साल का एवरेज प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस. और जो स्मूथनिंग है उसको मैं 3 कर दूंगा, मतलब 1 क्वार्टर. ओके. This is the logic of deciding the parameters. Then what I'll do, I'll come to style. हिस्टोग्राम का मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये 2 लाइन चाहिए. I'll just thicken them जिससे कि all of us can see it clearly. और ये रहा मेरा सेटअप, बस और कुछ नहीं चाहिए. This is the chart that we are looking at. Now, let's try to understand what is happening. What is happening when we have a crossover? Crossover मतलब 12 month average, 24 month average को काट के ऊपर जा. It's a sign of bullishness. There is no doubt about it. The average of 12 months is cutting the average of 24 months from below. It's a typical crossover system, the spread of moving average. तो अपने को ये देखना है
Now I'll tell you the rule. I can't see how it has behaved because of past prices. It should go into a log chart. Log chart should see this. So यहाँ पे देखिए, let's say this is where it has given a crossover. It has Hmm. multiple crossovers. It has given here also. Let me mark few of them. Yeah. Let me mark this. Okay. So this is where we got a crossover. यहाँ पे दिख नहीं Hmm. रहा है because of the scaling. Yeah. But this is where अगर मैं कोई भी एक स्कैनर पे देखता हूँ, MACD मंथली टाइम फ्रेम पे 12 24 3 कहाँ पे मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है वो बताइए. तो दिस इज व्हाट इट वुड हैव गिवन मी. What does this Yeah. mean technically? 12-month average is improving and it has gone above 24-month average. So these values are long-term values. One. Two, then I will take a look at my Heiken-Ashi. What is my Heiken-Ashi doing? My Heiken-Ashi has given a good looking green Heiken-Ashi. जिसका मतलब है a strong uptrend. I will not do anything. I will wait for it to play out. Because आप अगर यहाँ पे if we focus this area of the chart, Uh, just this area, forget all this, forget ये सब कुछ नहीं है, forget. सिर्फ ये देख के will you say that it has gone into an uptrend? Of course no, it's still in a range bound market. yeah. So, my suggestion is do nothing because we cannot trust just one candle and one crossover. Doesn't make sense. Yeah. Let's see and wait and see whether इसमें दम है कि नहीं, whether it actually rallies 10, 15, 20, 30% or not, which it does. Hmm. The moment it starts to do that, अपने को थोड़ा confidence आना चालू हो जाता है. So we know that yes, we have a trend. Now the second point is, when do I enter the trade? Because any trader would have identified it here. It went all the way up here. ये देखता है, we will keep on looking at it. We're not going to act upon it. So the $1,000,000 question is, when do we jump on it? My suggestion is, now that I have a defined trend, logically price-wise a defined trend, wait for red Heiken-Ashi, which I'm calling a pullback. Red Heiken-Ashi should have an upper shadow. Very important. Should have an upper shadow. The moment you get an upper shadow, let's say ये month जब खत्म होता है, इसके हाई के ऊपर चढ़ जाएगा. Just get on board. Oh. Use the lows of Heiken-Ashi as a stop loss. अगर उस investor को stop loss use करना है तो Uh, he or she may not use the stop loss. He might use a 25% stop loss because he's wanting to catch a 50. कुछ भी हो सकता है. There can be different ways of the stop loss. One, no stop loss. Two, 25% downside because I'm trying to catch 50% upside. Three, I can use some kind of a super trend as a stop loss. My focus first is the entry. So इसके ऊपर चढ़ जाइए and see how far it can take you. So this particular example that we're looking at would have given this move, which is 135%. ठीक है, मतलब यहां से आगे जाके जब 50% होगा, you put your order, exit, 50% मिल गया, thank you. You can ride it further, क्या पता 135%, 355% भी दे दे. With that logic, the good thing about MACD is it keeps on giving crossovers. जैसे यहाँ पे वो नीचे जाके फिर से crossover देता है. यहाँ पे I'm not too sure, level wise check करेंगे, 43, 43, 50, 50 नहीं, यहाँ पे crossover नहीं देता, यहाँ पे crossover देता है. यहाँ पे mark कर सकते हैं. We can mark it here. We can go back to the chart. ये रहा फिर से crossover आया. कुछ नहीं करेंगे, रेड हाइकेन-आशी के लिए वेट करेंगे. उसका अपर शैडो होना बहुत जरूरी है. अगर उसका अपर शैडो नहीं होता है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, यहाँ पे इट डजंट हैव एन अपर शैडो. फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल पे आते हैं. लेट्स कम हियर. लेट्स से आई वेटेड फॉर एन रेड हाइकेन-आशी. ओके, इसके ऊपर खरीदेंगे. इसके ऊपर तो गया नहीं. फिर ये हो गया, इसका तो अपर शैडो है नहीं. सो उसके बाद जिसका भी अपर शैडो मिलेगा, ग्रीन हो, रेड हो, व्हाटएवर, उसके ऊपर का ऑर्डर रहेगा खरीदने का. गया नहीं, अपर शैडो नहीं है, अपर शैडो नहीं है, ये अपर शैडो है, यहां पे खरीदें. सो कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, क्रॉसओवर showing strength, price confirming that strength. Let's wait. We'll wait for this. The moment we get this, get on board. Again, as I said, stop loss is up to the trader, investor. Get on board, and from there,
ये रहा आपका 50%। 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ मंथ you might be out, you want to ride the trend, you can ride in whatever you want to do, that is up to the trader, but 50% we need to catch once we have a confirmed trend. Now we are looking at examples which are in a strong uptrend, that's why they are looking so good, but Yeah. that may not be the case all the time, ऐसा हमेशा होगा नहीं. So for example recent अगर आइशर मोटर्स का जो recent अगर क्रॉसओवर देखते वो यहाँ पे मिला. आइशर मोटर क्रॉस्ड ओवर on this month. This month. Did it move into a nice uptrend? Yes. We wouldn't have not acted anything upon. Then upper shadow, no upper shadow, no upper shadow, upper shadow, no upper shadow, fresh upper shadow. Then we probably would have bought here. Now my question to my viewers and you is, बताइए क्या यहाँ पे खरीदते हम लोग? Will we put the order there? What do you think? Based on the logic we discussed right now. Mm, I'm not sure. Maybe No. not. Why? Look at the MACD. Yeah, 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 yeah. मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये जो जो see let me try and explain the logic in as simple manner as possible. I get a signal which tells me that the trend has evolved. I am waiting for a corrective move which will help me ride the next wave. यही logic है. Now once my trend is confirmed and if the corrective move is too deep, यार अगर तुम्हें ऊपर जाना है तुम इतना नीचे क्यों आ रहे हो? If the demand is very strong, then this should not happen. We love, when I say we, the community that we trade via TMP, Mm, STMPs, we love charts and stocks where either the demand is very strong or the supply is very strong. So the moment, say mm, for here in this area that we were discussing, the moment we see that a 1 2 3 4 5 6 month uptrend is going through a 5 6 month corrective mode, उसमें तो वो जान नहीं है. mm, It does not have that kind of mm, life in it. तो हम इसको छोड़ देंगे. Can this be applied mm. upside down? Yes, this can be applied upside. चलिए, let's do some random checking. I will not show you any charts, बना बनाया charts. This is the watch list that I have for auto, banks. देखिए on my right hand side. कोई भी नाम आपको अच्छा मैं लगा, just tell me. I'll मैं open बोलूं it. मैं बोलूं मैं बोलता हूँ, हाँ एक हाँ बिल्कुल. स्टॉक है जिसको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग ने भर भर के लोगों को बेचा है. वो स्टॉक बहुत लोग होल्ड करते हैं. कैम्स, निकालिए निकालिए, सारे इन्फ्लुएंसर लोग की अभी निकालता हूं मैं. कैम्स भर भर के बेचा है लोगों ने इस स्टॉक को, Gosh. और लोगों का ऊपर के भाव पे लिया हुआ है. Let's करें क्या check. है बताइए. CAMS. Okay, so CAMS, we have relatively lesser data in front of us because monthly charts पे या आप देखिए we don't even have a crossover. तो इसको ओके because we ओके. have a limited, देखिए objective is 50%. That's why we have come to some serious long-term charts, some serious long-term parameters of 12 months and 24 months. इस हाँ खाते में हाँ. CAMS doesn't hold, but अगर एक टेक्निकल ट्रेडर का जो सेटअप होता है वो कर्व फिटेड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रॉबस्ट. मतलब मैंने आपको कुछ देर पहले आई गेव यू द ज्ञान ऑफ लाइक मैक्रोकॉस्म शुड बी द माइक्रोकॉस्म. सो ये जो सेटअप जो मैंने अभी आपको दिखाया ऑन द मंथली चार्ट्स, दिस शुड वर्क ऑन द डेली चार्ट्स आल्सो. मतलब कुछ हद तक इट शुड हैव सम इन्फ्लुएंस. So I don't know. I don't track CAMS. We only track the FNO universe. I have no clue. This is a blinder for me. Let me go to the ओके. weekly chart. Let me go to the weekly chart. And whatever data of CAMS that is there right in front of us, you and me, I can see the very first crossover came here. Fine. You'll agree with me. This is where it gave या the first crossover. It has picked up. All या this while, I will not do anything. I know this is very difficult. This is difficult. But ये जो discussion आज हम लोग शाम को कर रहे हैं, यहाँ पे ये हम लोग we will not act on this. या कोई सोच सकता है why not, is there no other way in we can act? करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, but a rule is a rule. या There's a nice line that I share with everyone, the students in the class is, we need to stand for something or else we'll fall for everything. तो ये भी या खाना है वो भी खाना है, इस चक्कर में कुछ नहीं होता. So the logic that we shared, this was the trigger bar. Can I call this the trigger bar? In your defined improvement of the trend, established trend, this is the first pullback. या Then by that logic, can we go above this?
यस। Yeah. नाउ Yeah. आई डोंट नो, अब देखते हैं। नाउ लेट्स सी, यहां से ये जो 3 महीने में जो मूवमेंट आया, दिस वाज अराउंड 30%, आफ्टर विच इट वेंट Okay. थ्रू सम वोलेटिलिटी, एंड अगर पूरा टॉप में भी लेके जाए सो इट वाज अराउंड 43%। नाउ माय क्वेश्चन टू हाँ आवर व्यूअर्स इज, 50% कैच हम लोग मंथली चार्ट से पकड़ रहे हैं, 50% वीकली चार्ट से पकड़ना उतना इजी नहीं होगा, सो वी नीड टू हाँ बी अ लिटिल कंजर्वेटिव। yeah 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 My general observation is a cash market, a weekly chart based, कोई अगर cash market में trade कर रहा है, getting a 20-25% move is relatively easier. It's gettable. yeah Cash market, small cap, mid cap stock easily 20-25% दे देता है. So अगर मैं if I say for example मुझे इस volatility से बचना था, let's say, so from this point to my trade peak it gives me 31%, 31%, 31.35%. so अगर weekly chart देख के अगर ये rule आप use कर रहे हो, use 25%. The chart just समझ गया vanished for a few seconds. Just let me know if I'm audible, unvisible. yes absolutely audible and visible both Okay. तो ये रहा, तो that's it. Now this particular trade might sound very, मतलब it may not sound very smart because someone will say, hello, the crossover यहाँ आया, आपका ट्रेंड इंप्रूव यहाँ हुआ, आपने यहाँ से यहाँ तक अगर मैं खींचता तो 68% था, और 68% से आपने सिर्फ 25% कमाया. So to that question my answer is, again, you define your objective. आपको चाहिए क्या, ये चाहिए, कैसे चाहिए ये डिफाइन कीजिए, एंड स्टिक टू द रूल्स. द मोमेंट आप लेफ्ट राइट देखना चालू कर दोगे, दैट इज वेयर ये भी हाथ में नहीं आएगा. एटलीस्ट दिस मच आई हैव अंडरस्टूड एज अ ट्रेडर, एंड मच मोर एज अ मेंटर आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज द स्टूडेंट्स कीप्स मी आस्किंग, ये हो गया सर, ये मिस हो गया सर, वो मिस हो गया, बिकॉज दे कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, इनफैक्ट ये व्हिच इज वेरी क्वेश्चन डिफिकल्ट इन दिस. एक पीएस ने यही क्वेश्चन पूछा है. सच अ ट्रेंड ऑन मंथली चार्ट विल हैपन इन वेरी फ्यू स्टॉक्स एंड टू होल्ड देम फॉर मंथ्स विल बी वेरी वेरी चाहिए आपको 50%, तो होल्डिंग पीरियड होगा ही ना. टफ Again, we cannot put the horse in front of the cart. The discussion starts with 50%. You want to discuss, you take the zero out. आप हम लोग जीरो निकाल देते, 5% बात करते. Every day we will get opportunity. सही बात है Opportunities. How much will they work and all that I don't know. So या we या cannot put the horse in front of the cart. The discussion is about 50%. That's why I have taken you to the monthly chart. And of course it will, you'll need, मैंने पहले क्या बताया था? Patience. Patience is very important for the setup to develop, the trend to get established, the pullback to come. You enter the trade and patiently wait for that 50%. सही है Those तो who kind of have understood this हाँ can, I generally share this in my classes, is जो techniques मैं समझाता हूँ, do understand them, but don't believe me a single word. Don't trust me at all. But understand. And सही then है you go back to your charts and you do a visual test. कीजिए in 10 stocks, 20 stocks, 50 stocks. And then अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ दम है, then you start to trade, or else you should not. सही है तो अगर पी से 50% निकालना है तो पी से पेशेंस चाहिए फिर पी से प्रोसेस भी चाहिए नहीं तो जेड हो जाएगा ये कैम्स का आपका डेली चार्ट है, ठीक है. दादा एक और I'm क्वेश्चन just है trying to सॉरी बॉदर कर दिया show you the आपको fractal. आप दिखाइए दिखाइए फ्रैक्टल दिखाइए This is the daily chart in front of you. Same cams, आपका ही cams है. Crossover, improvement of the trend, establishment of the trend, pullback after the trend, shadows, enter. Now tell me, डेली चार्ट, ये डेली चार्ट है. अगर मंथली से हम लोग 50% अटेम्प्ट कर रहे हैं, वीकली से हम लोग 25% अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो डेली से कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? 8-10%. Is that okay? When a stock picks up डेली से momentum, 8 से 8-10%. 10%. हाँ मतलब वो भी बहुत है 10% ठीक है शॉर्ट स्विंग स्ट्रेटजीज Max 10%, 10% right? बरोबर है So this move, I'm quite sure would have given you 10%, 14%. If क्या you ask बात me,
इसका मतलब इतना इजीली नहीं है. वी कैन डू एन एवरेज रेंज एस्टैब्लिशमेंट एंड फिगर आउट कि कैम्स का लास्ट 3 क्वार्टर का या फिर 1 महीने 1 क्वार्टर से 3 क्वार्टर का एवरेज रेंज क्या रहता है. वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स जिससे कि एक समझ आ सके कि अगर ये यहां से चला तो कितना मोर और लेस चल सकता है. बट उतने डिटेल्स में उतने टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे. I would suggest if you're using daily chart, use something like 5 to 10%. 5% मिल जाता है, कॉस्ट पे स्टॉप लगा दीजिए, उसके ऊपर 10% मिलता है, निकल जाएंगे. एंड इन दिस काइंड ऑफ अ सिंपल, मुझे 50% चाहिए, तो यू कैन यूज अ 20-25% स्टॉप लॉस. कोई चार्ट देख के स्टॉप लॉस लगाने का जरूरत नहीं है. हम लोग कर सकते हैं, देयर आर वेज टू डू दैट, बट एज आई सेड दिस इज अ यूट्यूब लाइव एंड आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल. I'll take your next set of questions. Before I do Yes, that, there is I'll one show you one interesting more question by example. मैं Kranti. कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कैंप्स में ही हूँ. दादा, हाँ. क्रांति का क्वेश्चन है, कैन वॉल्यूम ट्रेड डिलीवरी बी यूज्ड एज इंडिकेटर टू Yes, yes. स्ट्रेंथ द कंफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड? Right. These are like toppings. Pizza, pizza हाँ. bread. उसके ऊपर हम लोग क्या करें? Now, coming back, the answer is yes. To his question, the answer is yes. मतलब कोई भी supporting evidence. Let me try and create a story. You found a monthly crossover in a stock. Okay. The chart is looking good. To support your anticipated bullishness, whatever supporting evidence you get, let's say delivery percentage improvement, good. सेक्टरल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, जो स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर का एक रोटेशन हो रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. सो वट एवर सपोर्टिंग एविडेंस यू गेट टू सपोर्ट योर एंटिसिपेटेड बुलिशनेस इज ऑलवेज अ गुड थिंग, बट डू नॉट गेट लॉस्ट इन दैट टू मच. Delivery percentage of volumes, yes, but that is not the reason to buy. That is a supporting evidence. उसके बेसिस पे हम लोग नहीं खरीद रहे. हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खरीद रहे प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शंस एंड डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइस. दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस. दिस इज जस्ट हेल्पिंग अस टू फाइंड दैट सिचुएशन, द क्रॉसओवर, डाउन ट्रेंड, बाउंस बैक, इसके नीचे शॉर्ट करना है. आई एम जस्ट शोइंग यू अ शॉर्ट एग्जांपल. Okay. So Kranti's answer is yes. Kranti's answer to his question is yes. Okay, got your point. अरे ये कौन है भाई, ये टाटा मोटर के पीछे पड़ गए हैं तो जितेंद्र भाटी जी, इनका पोर्शन ले ही लो यार आप. टाटा मोटर्स बीटीए डू, ये क्या है बीटीए डू? अच्छा बता दो. बता दो. गजब है यार. Okay, बता Tata दो यार Motors, टाटा मोटर जितेंद्र भाई को प्लीज. Tata Motors, monthly chart, bottoms out, crossover, crossover, over here, improvement, pullback, buy, entry point, high of this candle, ये रहा 50%, आपको 3 महीने में मिल गया, 3 मंथ. क्या बात है अभिजीत दा, किलर किलर. नो नो, क्वेश्चन मैं सुमीर. इसके कुछ डाउन सोर्स बताता हूँ आपको. हाँ बताइए नंबर वन. बताइए. हाँ. Number one, these I have noticed one thing, and I'm not an expert in wave theory, but एक 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 स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड के बाद जब रिवर्सल आता है, इट गिव्स द फर्स्ट वेव और द फर्स्ट लेग अप. ठीक है. जनरली ये लेग सबसे छोटा होता है, द शॉर्टेस्ट होता है, बिकॉज यहां अभी भी सप्लाई रहता है, लोगों के माइंड में अभी भी वो डाउट रहता है वेदर इट विल रिवर्स और नॉट. उसके बाद एक काउंटर मूव आता है. उसके बाद जो थर्ड लेग होता है या जो फिफ्थ लेग होता है, ये दो लेग्स, स्पेशली ये थर्ड लेग सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ पोजीशन. यहां पे इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटिमेंट आ चुका होता है, यहां पे ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड हो चुका होता है एंड फ्रेश मोमेंटम आता है.
फंडामेंटली इन सेक्टर्स में, इन स्टॉक्स में, इस वेव में यू स्टार्ट टू सी अ टर्न अराउंड, द रेशियो स्टार्ट्स टू इंप्रूव, द ओवरऑल सिचुएशन स्टार्ट्स टू इंप्रूव। और यहाँ पे एक्सुबरेंस होता है राइट एट द टॉप, यहाँ पे भी द मोमेंटम टेंड्स टू बी वेरी हाई, हाई वॉल्यूम ट्रेड होके एकदम टॉप बना के वो एकदम खत्म कर देता है ट्रेंड। As a trader, identifying this area is the best. So, if I take the Tata Motors example right in front of us, this was the trade which was right after the reversal. It was a downtrend, crossover, first move, pull back. Let's call it the next move. This was the best move. इसके बाद देखिए फिर से एक pull back आया. The indicators are still fairly placed. but देखिए यहाँ पे वैसा immediate movement नहीं आया. I think it would have also given us 50%. I think it would have also given us, yes, it would have also given us back to back, दो बार 50% मिल जाता. What I'm trying to focus over here is look at the movement, nature of the movement here, and look at the nature of the movement here. ये थोड़ा range bound रहा, एक दो तीन चार पांच महीने तक, उसके बाद by the 7th month it gave us 50. So the best of the situations is जब वो trend fresh reverse होगा. Okay. Okay. Okay, let me take this question. Although this is not part of our discussion because 50% intraday में तो नहीं आने वाला for sure. I can bet my soul for this. तो Sumir has asking intraday के लिए Hecken आशी यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए? हाँ कर सकते हैं. कैसे करेंगे that you have to figure out. बिल्कुल कर सकते हैं. See, these are tools. The idea is these are just tools like a hammer or a screwdriver and a saw. These are just tools. We just need to know how to use them, when to use them. If I have to fix the table, I should know which the carpenter to call. I'm not going to call the plumber. सही So बात I see this question being asked to me multiple times, sir, indicators कुछ काम का नहीं है, price action बताइए. है. Price action is the most important thing. Indicators are very useful provided you know how to use them. If you know how to use them, it's a boon. If you don't know how to use them, it's a curse. You look for something else. Absolutely. And to make you know how to use them, Abhijit Da is one of our superhero, and his courses, his modules, his amazing learnings are available in Elon Markets. तो जाइए Elon Markets में और अभिजीत दा को क्लिक करिए and get to know exactly what he is teaching all of us through his amazing years. In fact, I have a suggestion for you you. can go to superhero, you see Abhijita here, just click and you see so many contents, so many lovely modules which Abhijit has created. And he is also one of the mentors in our multi-asset trading program. Yes, if you want to join Abhijit for a short-term momentum trading program, here it is, masterclass on short-term momentum trading by him, where he's taking live classes 4 days a week. I mean, in live market. I think this is one thing which he does so well, teaching people in live market exactly the way it should be done. And if you want to have a comprehensive understanding about trading for 6 months, India's only multi-asset mentorship program, and Abhijit is part of that multi-asset mentorship program. So visit Elon Markets, locate for Abhijit. His link is also in the description. You can just go to the homepage. और अगर आपको अभिजीत के साथ में और आगे बढ़ना है और अपनी शेयर बाजार की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे जाके लेके जाना है, he is one of my gurus also. He has taught me so many things, just like other people who are there. We call people superhero not just for the sake of doing it, right? We call superhero because they are my mentors also. They are training me in various subjects. Thank you, Abhijit Da, for being my mentor and helping me in my journey of successful trading. Thank you. Before I leave, I have one suggestion for you. Every Yeah. year when the calendar year finishes, आप हम लोग सबको गिफ्ट भेजते हो. New Year gift, a pen, a calendar, a nice bottle, very nice of you. अभी आप हम लोग को सुपर हीरो बना दिए. So you can send us some costumes or a badge. Not a costume with the underwear above the dress, not that, but something which will make us feel that yes, we are really the superheroes. Just a fun suggestion. Yes, But that's a great yes, idea. it's an honor for me to be associated with Elon Markets, and
it goes back years. So thank you to you for you to have the patience in me to come this far, starting with AST and now with TMP and STMT. I think we have a long way to go. And one good thing is I have also seen that our traders have also evolved and matured a lot. What they used to be 10 years back when I used to train before, now they know so much and they understand. So it's so good to talk to them, especially the youngsters. Yes, absolutely. In fact, both of us have been in this domain for more than 10 years. We have seen many more new trainers emerging. Some of them actually are students who have now become trainers as well. But that's a proud feeling that the education is Yes. getting widespread through our different initiatives. But I think they call it OG. The OG will always be an OG. Yeah. Thank you, Abhijit, for your time today. And hopefully, we'll see more and more students and more retail traders joining us and getting empowered through their initiatives. Thank you, Abhijit. Thank you for lovely training today. और भाई दोस्तों, ये था अभिजीत के साथ में एक बातचीत। और मैं क्यों लेके आता हूँ इन सब को वेंसडे को, बिकॉज मुझे लगता है कि कितना कुछ और बताना बाकी रह गया आपको, कितना कुछ मुझे सिखाना बाकी रह गया। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट दीज पीपल आर अवेलेबल in whatever way I can, through free initiatives, through some paid initiatives. Obviously, everyone have time and value. We all value our time. तो कई बार ऐसा होता है कि because समय का value है, we all want only committed people to join us in these endeavors. So I hope you understand and I hope you become part of this amazing TMP family we are building together. Thank you. We'll see you soon. Bye bye. Take care.